Okay guys, so let's start the new topic. Okay, and topic is telling about the exception handling concept. Remember, and it is very important, guys. Interview point of view also. So first, you have to understand what is exception. Okay, and what would be the hierarchy of exception. Okay, and what are the advantages and how we can handle and what are the type of exception we have. Okay, what is the difference between checked exception and unchecked exception? What is the try catch finally block? What is the try block? What is the catch block? What is the finally block? And also we will discuss about the try with resources. Okay, and yeah, there are many questions guys we will try to cover here. If anything comes in my mind, of course that answer we will cover. Okay, so let's start. What is the exception and why we need the exception? Guys, this we have to remember. Okay, so we will see here what is exception and why we need to handle it. So let's say guys, we have a one program. Okay, and the program is the set of interrelated instructions. Okay, so let's say in the one function, or you can say this is one program. Okay, this is the first line, this is the second line, this is the third line, this is the fourth line, and this is the fifth line. Okay, so if this line has been executed and this line has been executed, if error is raising on this statement, third one, and if this error not being handled by the programmer, okay, so my program will get terminated, okay, abnormally. Okay, so abnormal termination will happen if we do not handle the exception. So we are actually trying to prevent the abnormal termination, okay, for our program execution. Okay, so this is the technique by which we can prevent the abnormal termination of our program at the time of execution. Okay, so we can handle explicitly. If we do not handle, then GRE will handle it. Remember, we can handle the exception in two ways. Programmer can handle, okay, by using try catch block. So let's say uh, there is a possibility to raise the exception at runtime from this statement, from this third statement. So what I will do, if there is a possibility, okay, this programmer has to analyze the code, and if programmer or developer think that there is a possibility to raise the exception from the third statement, then better we have to put this statement better. We can put this statement inside the try block. So how? So let's say this is, you can say, abnormal termination. Right? My program is will get terminated. Okay. So abnormal termination of my program execution. Okay. If we do not handle the exception, if this is the first case, you can say not handling the exception, not runtime error, you can say not handling runtime error.
error by programmer, not handling runtime error by programmer. Okay, the case number 1. Case now the case number 2, guys, what would be? The case number 2, here programmer trying to handle the exception. Okay, let's say this is my first line, second line statement, third line statement, fourth line statement, fifth line statement. Okay, and let's say this is the first, second, just for counting purpose, third, fifth. So this time, you know, I put it, let's say, from third line. So I'm putting this third line inside the try catch block. If this programmer has to analyze the code, okay. So when programmer write the code, so program will analyze the code. That programmer will analyze the code. That if this code is throwing any exception, or this code is there is a possibility, if there is a possibility to raise any exception inside the code, then that code programmer has to put inside the try block. So let's say I am putting, this is my try block and this is my catch block. Okay, now the remaining statement I will putting, let's say this third one statement programmer is putting here inside the try block, and if any exception raised will be handled here. So if catch is there, for corresponding exception, if catch is there, it will be handled by catch block. If catch is not there for the raising exception, if there is no catch for the raising exception, then GRE will handle. Remember, you can say this is the first, second line, this is the third line, this is the fourth, and this is the fifth. You can say in this way we are preventing the abnormal condition. Here runtime error handling at runtime, error handling, runtime exception, exception handling at runtime by catch block. Okay, handling at runtime by catch block. If suppose there is an exception name, suppose null pointer exception, I will tell you what is the null pointer exception, and corresponding that exception there is a catch we mentioned, then catch will handle. Otherwise, if catch is not there, then GRE will handle. Okay, so remember, if we do not handle the exception, if programmer not handling the exception, then GRE will handle. Okay. But if programmer is able to handle the exception, program can give the customized message to the client. We are writing the, you can say, code for, we are writing this program for our client. Okay, so we can display the customized message if we are able to handle. If programmer not able to handle the exception which is causing by the program, okay, at that time GRE will handle, but
GRE will display the uh, message which won't be the user friendly message, you can say. Okay, fine. So what is exception? Exception, you can say it's runtime error, you can say. Okay, and which must be handled by the programmer. Okay, so programmer try to handle the exception. Okay, so we have a, let's try to understand about the exception hierarchy. So if what is the exception hierarchy? We have a here the first hierarchy, you can say in the first class in the hierarchy java.like.object. Every class will be extending from object class in Java, and the throwable is the abstract class which is containing the all kind of error in Java. All kind of error means whether it is an error or whether it is an exception. So we are categorizing the error in two ways. Remember, first type is error, and the second type is exception. So if you know programmer is able to handle the exception, programmer is able to you know handle the error, that error becomes the exception. You can say programmer either handle the programmatically, or programmer can do something, okay, to prevent the abnormal termination of the uh, program execution. Okay, so if programmer know that how to handle this error, that error is becoming the exception. Programmer can do something in at program. Uh, Programmer can do something programmatically. Okay, and write something programmatically to handle the error. Can provide some solution, you can say, and that error is we are able to identify. Programmer is able to identify. Okay, so that error, you can say, is becoming the exception which we are able to handle. And if error we are not able to identify, and so here programmer cannot do anything. Nothing programmer can do. Nothing developer can you know write, or cannot write any code to handle error, because these error belong to the system specific error. You can say system error, like stack overflow error. You can say, see, once the stack is full, okay, and still you are doing the execution, at the time the system through the system as a stack overflow error. Out of memory error, memory is not available. Okay, memory is not present, not available while executing the program, then out of memory error. Virtual machine error. Okay, so this is, you can say, error which cannot be handled by the programmer. Okay, these all error, you can say, system error. Programmer cannot do anything here, but this side programmer can do something. Okay, handle the this, you can say, if any exception is raising from third statement, and programmer is able to identify, do the exception, then we can handle, and we can handle here, see, in the try-catch block, and we can prevent the abnormal termination of the program. Okay, okay. So advantage, what is the advantage? You can see if we are able to handle the exception, these are the advantage. So you can say separation of error handling logic from normal logic. Of course, I told you this is my, you can say, you see, this is my normal logic, and this is the exception handling logic. It is separating, you can say. Okay, you can say it is error prone statement. This is the error prone statement. Okay,
unexpected error can be raised from this third statement. Unexpected error can be raised from this third statement. Remember, if this error, unexpected error, programmer is able to identify and able to handle, and we can handle with the help of try catch block. Okay, so by handling the unexpected error, we can prevent the abnormal termination. Also, my program will not get terminated, but here in case of first case, you can say the error is raising from third statement, and here we are not able to handle. We are not handling, so GRE will handle. But remember, my program is getting terminated from this line. The other statement won't get executed if error is raising from third statement. So fourth number or fifth number statement won't get executed because we are not handling. But how we can see avoid if you are able to handle? See, in this case we are able to handle. So even exception is raising from this line, even runtime error is raising from third statement, but here we are handling the loop try catch block. So my program will not get terminated abnormally, and even after getting the exception, after getting the runtime error, my program execution will get terminated. So fourth and fifth statement still will get execute, even we are getting the exception from third statement. So my program will not terminate abnormally. Remember, okay. So if we are able to handle the exception, my program execution will be continue, even we are getting the exception and time error. Okay. So here my program getting the runtime error, but still my program is not getting the bit, and program execution is still continuing. Can you see here? Okay. Fine. So here separation of error handling logic from normal logic, graceful termination. Yes, graceful termination and recovery and retry. So same thing. My program will not terminate. It will be continue. My program will be continue. Even we are getting the exception in case of handling the exception. Okay. In case of we are handling the exception. Now, meta debugging so means like if we are able to handle the exception. Okay. So in this case, guys, like if you try to debug your code, and while debugging time, if any error is raising, and that error if you are handling, so you won't face any issue at the time of debugging. Otherwise, if you don't uh, handle the exception at the time of debugging of the program, at the time of debugging of program, my program will get terminated. So I won't be able to continue the debugging, okay, in the program. Remember. So if I want to continue my debugging process, then error prone statement must be handled. Remember, error prone statement must be handled. Remember, okay. So we can perform the better debugging by handling the exception. क्योंकि आप जब डिबग कर रहे होंगे और उस बीच में अगर कोई एक्सेप्शन आता है, घंटे मिनट आती है, और अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया है, तो मेरा डिबग फेल हो जाएगा इसमें से, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग इंटरनेट तो डिबग कैसे करें, ठीक है, एरर आ जाएगा, डिबगिंग नहीं हो पाएगी सक्सेसफुली. बट अगर मेरा एक्सेप्शन हैंडल हुआ है, तो ऑफकोर्स वी the debugging process will be continuing even after getting the exception if we are able to handle the exception. Now propagation of error को जीवन ये गाइस एक तरह का ऐसा होता है कि जैसे हम बोल सकते हैं कि एक मेथड से कोई एक्सेप्शन रेज हो रहा है, उस मेथड को अगर वो एक्सेप्शन कहीं हैंडल नहीं हुआ, तो वो
अप टू एंड स्टेटमेंट तक जाएगा, जब तक वो हैंडल नहीं होता है। वो बाद में अगर एट द एंड स्टेटमेंट में भी अगर हैंडल नहीं होता है तो वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे here we have here method 3. Inside the method 3 we are performing this error, we are performing this operation, division operation you can say. Okay. And there is a possibility to raise the exception, of course, when you number divided by 0 means infinite. Okay. Arithmetic exception. So आप देखोगे यहाँ पर कि इस मेथड ने इस एरर प्रोन स्टेटमेंट को हैंडल नहीं किया, लेकिन अभी आप देखोगे ये मेरा मेथड है, मेथड 1। मेथड 1 से मैं मेथड 2 कॉल कर रहा हूँ, मेथड 2 is calling the method 3. So method 2 is also not handling this error prone statement, error prone this error which is received from method 3. तो ये method 3 जब कॉल होगा तो method 3 रेज करेगा एक्सेप्शन जो method 2 के अंदर आएगा। method 2 में भी हैंडल नहीं हुआ तो method 2 रेज करेगा, तो method 1 में method 1 में यहाँ पे हैंडल कर दिया है, we are catching here. Okay, so exception propagates here automatically. Okay, I will tell you what is the unchecked exception. Okay, just try to understand. This is the error prone statement and we are not handling exception is raising, but this method 3 is calling from method 2, so exception will raise from here, and this method 2 is raising from method 1, so exception is raising from this method, and we are handling here. This is, you can say. Okay, so let's start programmatically. Okay guys, so before moving to the program, what I will do, I will try to explain the hierarchy of the exception. So this is the, you can say, root class of the exception, throwable member. So throwable means it's holding the all kind of error, okay, all kind of Java error. So some of them uh, can be handled by the programmer, some of them cannot be handled by the programmer, cannot be recognized by the programmer, cannot be identified by the programmer. So those error, we call the error as well, okay, and the stack overflow automatically. But some of them belong to the exception, some of them, error belong to the exception because those error actually uh, we are able to identify and we are able to handle. So programmer can do something to handle this kind of error. So we have a here, runtime exception. So all runtime error, will be extending from runtime exception. Runtime error means not unchecked exception. You can say, I will tell you, programmer like interviewer may ask what is the checked and past is unchecked. This is the, these belong to the unchecked exception. You can say unchecked exception means, unchecked exception means guys, which are not forced by the compiler either to be handled or specified with throws कीवर्ड। ध्यान रखना, ये हमें कंपाइलर यहाँ फोर्स नहीं करेगा। अगर कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन आती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन बिलोंग टू दिस रेट की, रिमेंबर गाइस, ये वाली रेट की जितनी है ये अनचेक्ड एक्सेप्शन को है, नॉट दिस वन, दिस यू कैन दिस वन। और भी अनचेक्ड एक्सेप्शन है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ अबाउट एक्सेप्शन, there are many unchecked exceptions. So basically the unchecked exceptions are those exceptions which are not forced by the compiler either to be properly caught or specified with throws keyword, remember, ठीक है। तो आपको कंपाइलर यहाँ फोर्स नहीं कर रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट में आपके प्रोग्राम से कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रेज द अनचेक्ड एक्सेप्शन, अगर आपको मालूम है तो आप उसको हैंडल करो, नहीं मालूम है तो आप
कर भी सकते हो उसको हैंडल, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द प्रोग्रामर। अगर प्रोग्रामर हैंडल नहीं करेगा तो यहाँ पर कंपाइलर फोर्स नहीं करेगा, एंड दोज एरर विल बी हैंडल एट रन टाइम, ठीक है, ध्यान रखना। रन टाइम पर एरर हैंडलिंग होगी बाई जीआरई, एंड दीज आर द चेक एक्सेप्शन। ये चेक एक्सेप्शन है। Checked exception are those exceptions which are forced by the compiler either to be properly caught, ओके, या तो उनको हैंडल करो। कंपाइलर आपको बोल रहा है कंपाइलेशन टाइम पर ही कि अगर कोई चेक्ड एक्सेप्शन आपके नाम से रेज हो रहा है, किसी स्टेटमेंट से रेज हो रहा है या किसी मेथड से रेज हो रहा है तो उसको हैंडल करो। अदरवाइज अगर हैंडल नहीं कर रहे हो तो स्पेस में भी थ्रोस की बात ध्यान रखना, क्योंकि वो कंपाइलर उसको कंपाइल टाइम पर ही चेक कर रहा है कि वेदर द एक्सेप्शन बिलोंग टू द चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड मीन्स compiler is forcing to you either handle it or specify throws keyword, ध्यान रखना। unchecked exception compiler not forcing you, okay, to handle or specify throws keyword, आप नहीं करोगे तो जीआरई विल हैंडल। तो जो चेक्ड एक्सेप्शन है उसमें आपको कंपाइलर फोर्स कर रहा है क्योंकि वो रन टाइम पर जाएंगे और जीआरई have no solution for this checked exception because these error belong to the application specific error. Application specific error. Application specific error मतलब application specific exception मतलब आपको ये समझो specific exception ले लो या application specific error, जैसे this error will not be part of my Java application, इसलिए जीआरई कह रहा है कि भाई इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है, आप checked exception के बारे में we are not aware about, so that's why compiler is forcing कि भाई आप ही हैंडल करो, प्रोग्रामर ही हैंडल करे उसको, अगर नहीं कर रहा है तो इट मस्ट बी स्पेस में भी थ्रोस कीवर्ड, ओके। तो जैसे मैं बोला हूँ आईयू एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो आईयू एक्सेप्शन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ जावा एप्लीकेशन, तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगा, ध्यान रखना, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ जावा एप्लीकेशन, ध्यान रखना, ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करते हो तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर जावा एप्लीकेशन, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। So if while performing the input output operation, there might be there may be input output IU exception can be raised. Okay. So while performing the input output operation, there is a possibility to raise the IU exception, and GRE is not aware about the IU exception how to handle. GRE have no any solution. So that's why GRE not able to handle these all error. Okay. Not able to provide the, you can say, uh, any message, okay, any meaningful message that what is the like what is the root cause of error, what is the yes root cause of error, and that's why compiler is not allowing this exception, compiler not allowing this exception at runtime. Compiler is checking it compilation time, that must be handled or specified through schema, ठीक है, and these all exceptions belong to the application error. So SQL exception, see if we talk about SQL exception, this is also coming outside the Java application. This exception belongs to the database exception. So while connecting the database error connection, while getting the connection between the database, like with database, so there uh, you know error can raise from database side. So GR is not aware about database error. So this kind of error, compiler is not allowing, compiler is uh, checking at compilation time, saying that please specify or handle it. Okay. File not found exception. If
if you are reading file, if you are writing getting into the file, reading from file, so this is also outside the Java application error, you can say. Okay, and unchecked exception means coming is all runtime exception. This all unchecked exception means coming from the Java application, can be handled programmatically. Programmer can do something here, remember. Okay, programmer can write some solution, can provide some, you know, yeah, can what we say, correct the statement, logical error, you can say, correct the logical error, like division by zero, divide by zero, kind of. So this is, guys, I told you about the exception. Okay, now I will move to, I will move uh, for, let me say, okay, so guys, I tell you here, like we will try to write the subprogram. Okay, so programmatically we will try to understand, okay, how we can handle the exception, and if we do not handle, what will be the issue. Let's say I have a simple error int, a simple statement I am writing int a equal to like 9, it will be equal to 3, it will be equal to a divided by b, suppose. Okay, so this is just simple program, you can say, and we will try to system out. Run this program and see the output. Just simple program. Okay, so whatever, guys, we have discussed, the same thing I will try to implement here. Like I will show you the some runtime exception, I will show you the some exception, I will try to create the customized exception, user defined exception, see how to create the user defined exception. So can you see here, version is 3, there is no issue now, fine. And this is my, you can see line number 13, 14, 15 and 16. Okay, now if I write, sorry, b, and if b having the 0, suppose this is the input, okay, and b is containing the 0, it means divide by 0 we are doing. Okay, so let's say what would be the output, and the error, there is possibility to raise error from this line, remember. Okay, let's see whether this line will execute or not. See, this is the error is coming. This is the error, and see, can you see, in this case my program is getting terminate abnormally. Why? Because we have not handled the exception. Okay, and what is the exception is coming? Arithmetic exception. So GRE is aware about this exception, arithmetic, because I told you here is all exception runtime exception. Can you see, arithmetic exception is coming inside the runtime exception. So if you see, and we are not handling the exception here, remember. So compiler is not forcing us to handle it or specify with those keyword, remember. But if we do not handle the exception, runtime exception, then GRE will handle, and GRE is giving what message, can you see here? Divide by 0. This is not the meaningful message, remember. So you
can provide the meaningful message also, but how is it possible? Can you see how is it possible? If you want to provide the meaningful message, you want to handle this arithmetic exception. Okay, so we have not handled. Remember, now I am trying to handle the exception. If you see, the case one, not handle the exception here. So my abnormal termination of my program execution. Okay. Second, in the case of second, first case, this is so program is getting abnormal termination. Can you see? This line is not executing. This line not been executed. They have escaped this line. Okay. Because exception is coming from this line. So abnormal termination happened. Now, second case what was? So if there is any statement which might raise the exception runtime error, so better to put that statement inside the try block. So we can avoid the abnormal termination. See, I will put try. I know that programmer know. The programmer has to analyze the code. Remember. See, so from this statement, I know that because divide by 0, I am doing hard coded. I am doing, but you can pass this input from client side. You can take this input at runtime also. Remember, but this time for understanding, I have given the hard coded input. Okay, so you also can take these all input at runtime. Can you see here? From this line, there is a possibility. This is, you can say, error prone statement. Error prone statement. I have analyzed. I have put that statement inside the try block, and if successfully done, then result. Okay, but if exception is coming, then what I am doing? 0 is not allowed. Okay, and here you can do better. So here we are handling, remember. So this is the try block and this is the catch block. Remember. Okay. And programmer interviewer may ask, can we write try without catch? Of course we can write try with finally also. Try with finally. Okay. ऐसा नहीं है कि आप try हमेशा catch के साथ ही आएगा. Try with finally block के साथ ले सकते हैं. We'll see what is the final block. Okay. So later we'll see final block later. Now if you see, we'll try to avoid the abnormal termination of the program easily. This is, can you see how after this, if you write any statement system out println ending ending program. Okay. Okay. Now see, division by 0 is not allowed. Meaningful message we are giving. Okay. See. And even we are avoiding the abnormal termination of the program. Can you see? Even we are getting the runtime error, and we are able to handle here. See, error division by 0, and after that ending execution. It means my program is not terminating abnormally.
if we are handling the error. Remember, if we are able to handle the error, program will not terminate abnormally. Okay, so this is the case. Fine. Okay. Now you can define any number of catch here. So let's say I will take one more example here. Let's say string s equal to, okay, array example I will say int equal to 2 comma 3 comma 55 comma 67. Now I'm trying to access the, let's say, a, this is the a0, a1, a2, a3 and a c. A2 means like A0, A1, A2. 55 will be displayed here. Okay, and this is the error because we are accessing the array with the help of index number. So if you give the wrong index number, you might get the runtime error. Okay, so let's say this time I think this is the wrong thing. Catch, any number of catch you can write here. Array index of boundary. Okay. So as of now, like A0, A1, A2, A3. If you do, let's say, let's say A4. A4 I will put here A4. Okay. अभी आप देखोगे A0, A1, A2, A3, A4 है नहीं यहाँ पे. अभी देखो क्या error आता है. Here handling array index of the boundaries accounts. मतलब ये वाला एक्सेप्शन आएगा. ठीक है, तो यहाँ हैंडल हो गया. उसके बाद एंडिंग एग्जीक्यूट. तो इसका मतलब गाइस ये है कि अगर आप हैंडल कर पा रहे हैं एक्सेप्शन को तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ. एक्सेप्शन के बाद भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा. जैसे मेरा ये एक्सेप्शन आने के बाद भी हमने हैंडल किया और मेरा बाद में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर. ठीक है, तो ये फायदे हैं गाइस. इससे हम रिकवर कर लेते हैं. ठीक है, जैसे मैं एक और बनाता हूँ. जैसे लेट्स से तो डाइट कर रहा था लेकिन अभी मैं 4 int I equal to 0, I less than 8 length semicolon I plus plus. ठीक है, system out dot println. A simple thing guys, we have to just okay. और मेरे को ये लगा कि भाई यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकता है क्योंकि एक्सेसिंग सपोज अभी तो ये डॉट लेंथ डाला है यहाँ पे. फिर मैंने यहाँ पे सपोज अभी तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. इसमें से कोई कैच वाला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि अभी हम कोई वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग द अरे एलिमेंट. कोई एरर नहीं है. देख रहे हो आप, कोई एरर नहीं है. देखो यहाँ पे. ठीक है, 2355. अभी मैं यहाँ पर सपोज लेंथ प्लस 1 सपोज कुछ कर दिया मैंने. अभी सपोज 8 को मैंने 6 दे दिया सपोज. अभी देखना आप आ जाएगा एरर क्योंकि A5 तक चलेगा. A5 तक कुछ है नहीं यहाँ पे.
देखो आ गया, कहाँ तक चला देखो, आप देख सकते हो 2 3 5 5 6 7 चला यहाँ तक, पूरे एरर के एलिमेंट दे दिया आगे। अब इसके बाद आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर A0 A1 A2 A3 A4 के बाद ही डिस्प्ले आ गया, एरर आ गया, एरर आया। वो देखिएगा, यहाँ देखिएगा नहीं है, ये वाला कैच नहीं है। कौन सा कैच मिला? अरे इंडेक्स यहाँ मिला, इसके करस्पॉन्डिंग इन्होंने मैसेज दे दिया। फिर आप देखोगे मेरा प्रोग्राम उसके बाद ही चला। ठीक है, तो यहाँ पर एबनॉर्मल टर्मिनेशन प्रोग्राम पर नहीं पाया गया। और बेसिकली हम देखते हैं अपने कोड के अंदर कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पर एरर रन टाइम पर आ सकती है, तो उसको हम ट्राई के अंदर रखते हैं और वी ट्राई टू हैंडल दैट कैच प्रॉब्लम। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्रामेटिकली क्वेश्चन होंगे गाइस, इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे। मैं इस सेशन की बात कवर करूँगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट अच्छे हैं काफ़ी। पहले हम चाहते हैं कि कंसेप्ट कवर करें। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन ऑफ कोर्स you can easily understand the tricky question which may be asked, which may ask in the interview. Okay, तो ये हो गया। अभी गाइस मैं क्या करूँगा, मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे क्या हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन से पहले मान के चलो ये आ जाएगा स्ट्रिंग एस। अब स्ट्रिंग मेरी क्लास, उसके अंदर मेथड है। अगर मैं मान लो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एस डॉट लेंथ किया मैंने, लेकिन एस के अंदर तो अभी कोई वैल्यू नहीं है। क्या कह रहा है? अच्छा, स्लाइस फिर से मैंने यहाँ पर कोई नल कर दिया अभी बाई डिफॉल्ट। यहाँ पर जो आ जाएगा स्ट्रिंग इंडेक्स नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाएगा। क्या आया देखो, नल पॉइंट एक्सेप्शन हु इज गिविंग दिस GRE बिकॉज वी हैव नॉट रिटन एनी कोड टू हैंडल इट। तो कहीं ऐसा होता है गाइस, कोई रेफरेंस वेरिएबल है, तो वो रेफरेंस वेरिएबल इफ इट इज पॉइंटिंग टू द नल नॉट पॉइंटिंग टू एनी ऑब्जेक्ट, उस केस में अगर रेफरेंस वेरिएबल के साथ मेथड कॉल करते हैं तो नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाता है। तो उसको अगर हमें ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उसको ट्राई कैच के अंदर रखेंगे। जैसे ये हो गया स्टेटमेंट, यहाँ रखेंगे ट्राई कैच के अंदर, ट्राई कैच। ठीक है, ये आ गया देखो। अब इसमें मैंने फाइनली ब्लॉक भी ऐड किया है, देखो guys। ठीक है, इसमें इसलिए किया है फाइनली ब्लॉक कि आपको मालूम होना चाहिए फाइनली ब्लॉक का मतलब क्या है। इट एग्जीक्यूट वेदर एक्सेप्शन कम और नॉट। ठीक है, एक्सेप्शन आए तो उसको एग्जीक्यूट होना है, नहीं आए तो एग्जीक्यूट होना है। द पर्पज ऑफ फाइनली ब्लॉक टू क्लोजिंग द रिसोर्सेज, जैसे फाइल आपने खोली है रीड राइट करने के लिए, तो अगर आप ट्राई के अंदर आप नो यू आर परफॉर्मिंग द रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन, ओके, सो यू हैव ओपन द फाइल। अब लेकिन अगर आप क्लोज करना भूल जाता है डेवलपर मैनुअली, तो फाइनली ब्लॉक में हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, वी विल ट्राई टू क्लोज द फाइल हियर। सेम थिंग फॉर डेटाबेस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो डेटाबेस कनेक्शन को हम क्लोज करना भूल गए, तो उन रिसोर्सेज को हम जो यूटिलाइज कर रहे थे एप्लीकेशन के अंदर, if we are not able to close, we are not able to relocate those resources, we can relocate with that finally block। तो जैसे डेटाबेस कनेक्शन ओपन हुआ था, डेटाबेस का हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, एट द एंड इट शुड क्लोज द डेटाबेस कनेक्शन, तो वो स्टेटमेंट हम क्लोजिंग स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। तो एक्सेप्शन आएगा तो अभी डेटाबेस कनेक्शन क्लोज होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं आएगा, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया सक्सेसफुली डेटाबेस से, तो भी एक्सेप्शन, तो भी
डेटाबेस कनेक्शन क्लोज होना चाहिए। ये गाइस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि फाइनल ब्लॉक कब एग्जीक्यूट नहीं होता है कि अगर आपने सिस्टम डॉट एग्जिट कर दिया, ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट कर दिया तो फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे अभी देखो मैं बता रहा हूँ, अभी आप देखोगे नल पॉइंट एक्सेप्शन यहाँ आ जाएगा, एक्सेप्शन कोड दिखा देगा और फाइनली ब्लॉक भी दिखाएगा। देखो आप क्या आ रहा है, नल पॉइंट एक्सेप्शन कोड के भी यहाँ से नल पॉइंट एक्सेप्शन आया, फाइनली ब्लॉक आ गया, नल पॉइंट एक्सेप्शन कोड, फिर ये वाला कैच नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर हैंडल हो गया है। अगर एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल नहीं होता तो वो इस वाले एक्सेप्शन पे आता है। जैसे अगर मैं कोई और एक्सेप्शन रेज करूँगा इस ट्राइब लूप से तो वो यहाँ वाले कैच में आ जाएगा, ठीक है। ये सुपर एक्सेप्शन है, सुपर क्लास एक्सेप्शन। तो इसके जितने भी चाइल्ड क्लास एक्सेप्शन अगर ट्राई ब्लॉक से रेज होते हैं और वो हैंडल नहीं होता है, if developer not writing any catch block for that particular exception which has been raising from the try block, then it will be handled by this exception, super class exception से handle होगा। अभी आप देखो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट, एक्सेप्शन कॉट हुआ, हैंडल हुआ हमने, यहाँ से हम सपोज अगर ये नहीं है ध्यान रखना, तो अभी देखना आप, तो इसमें एक्सेप्शन नल पॉइंट एक्सेप्शन रेज हो रहा है बिनु, बट देयर इज नो कैच ब्लॉक फॉर नल पॉइंट एक्सेप्शन। तो ये सुपर एक्सेप्शन, सुपर क्लास एक्सेप्शन है, सारे एक्सेप्शन जो इसके सब क्लासेस के वो सभी हैंडल हो जाएंगे, बट फाइनली ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूट द एक्सेप्शन रेज और कैन यू सी एक्सेप्शन कॉड फ्रॉम दिस लाइन, you don't get message even the message is none because ऐसे ये एरर मैसेज है जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है इन्होंने, जेरी ने रन टाइम पर एरर मैसेज आया देखा और यहाँ से इन्होंने डिस्प्ले कर दिया, फाइन। So we have understood about this type of hierarchy. Can you see here this unchecked exception we have understood. So unchecked exception are not forced by the compiler either to properly call or display by or specify with throws keyword, ध्यान रखना वो मैं देख चुका हूँ आप, ठीक है, फाइन। अगर आप नहीं भी हैंडल करोगे, जैसे आप देखो यहाँ से अनचेक एक्सेप्शन आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये रन टाइम पर इसको जारी डिस्प्ले कर देगा मैसेज, ठीक है। ये देखो एक्सेप्शन है, दिस इज द एरर प्रोन स्टेटमेंट, ये वाला द एरर प्रोन स्टेटमेंट, एरर कैसे ढूंढना है एप्रोप्रिएट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, चलो इसमें भी मैं से एक मेथड बनाता हूँ, जैसे डेटाबेस एक्सेप्शन की बात करूँगा तो okay, so we are now discuss about the checked exception. So guys, like application specific error coming from outside the Java application, remember, and GRE have no solution, okay. That's why compiler not allowing at runtime, compiler is asking to, you know, compiler is forcing to the Java developer that either specify or handle with try catch block, specify with those keyword or handle by try catch block. So this is, you can say,
reader, performing the input output operation. I will take the separate session for input output operation. Okay, so just try to understand that with this statement there is a checked exception is raising, and what is the checked exception? Checked by the compiler. Remember, and and compiler is forcing us that please handle this as exception और specify with throws कीवर्ड, या तो आप इसको हैंडल कीजिए क्योंकि कंपाइलर इसको रन टाइम पर नहीं जाने दे रहा है, बिकॉज द चेक एक्सेप्शन कंपाइलर चेकिंग इट कंपाइलेशन टाइम. ठीक है, कंपाइलर आस्किंग आइदर हैंडल करो और स्पेसिफाई विद थ्रोस कीवर्ड. तो थ्रोस कीवर्ड गाइस इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एक्सेप्शन. ओके, we can specify the exception with method signature. Okay, so either handle it or specify with throws keyword. So let's say I am not handling, so where we have to, this method is throwing the checked exception. So what compiler is saying, specify it, specify the exception. THROWS. So throws is the keyword which is used to specify the exception which can be throws by method. It is used to specify the exception which can be throws by method. So here IO exception. Now this one IO. Okay, so see, तो अभी मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको आसानी से हो जाएगी समझने. ओके, so checked exception are those exceptions which are forced by the compiler, either handle it or specify with throws keyword. ये throws keyword के थ्रू हमने स्पेसिफाई कर दिया. तो वही एक्सेप्शन स्पेसिफाई करेंगे हम यहाँ पर जो एक्सेप्शन रेज होगा है. ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो देखो कंपाइलर क्या करेगा, अलाउ नहीं कर रहा है अपने स्टेटमेंट को रन टाइम पर. सी unhandled exception, file not found exception, sorry file not found exception है, file not found, even IO exception also is there, I think. Okay, okay. So IO exception, अगर फाइल नॉट फाउंड आ रहा है तो कर लेते हैं फाइल अभी देखते हैं क्या इशू आ गया. किया, देखो ये चला गया, फाइल नॉट फाउंड चला गया, इस वाली लाइन से फाइल नॉट फाउंड आ रहा था. ठीक है, अभी इस वाली लाइन से क्या आ रहा है, IO एक्सेप्शन. तो हर एक लाइन के, क्योंकि ये मेथड है मेरा मेन मेथड है, there is a possibility to raise the file not found exception. There is a possibility to raise the IO exception. Can you see? I'm saying here. So all exception list you have to specify here, which can be thrown by method. IO exception. ठीक है, got it? So, but okay, the throws is the keyword which that is used to specify the exception which can be thrown by method. So these two exceptions, okay, can be thrown by this method, main method. ये एरर कौन स्टेटमेंट है, यहाँ से एक्सेप्शन रेस हो सकता है, यहाँ से. अब आप रन करोगे कोई इशू नहीं है, हो जाएगा. फाइल नहीं मिली है इसको, तो ऐसे इनपुट क्या है, FILE फाइल डॉट txt. ओके, मैंने इसके अंदर ही बना दी, इसमें लिख दिया हेलो हाय
फाइन मतलब मैं दोबारा file.txt file.txt ओके let's see मैं इसमें so I have put in this file inside this main folder of the project. Okay, and now if I try to run this program, so my program will execute successfully. ये है वो आया होगा मुझे. Okay, so basically guys मेन मकसद हमारा यही होता है एक्सेप्शन देने का कि आप जब भी कोई कोड लिख रहे हो आपको ये देखना है कि आपके कोड से कोई रन टाइम एरर तो नहीं रेज हो रही है. अगर हो रही है देयर इज अ पॉसिबिलिटी नो इफ यू गिव द एरर फाउंड स्टेटमेंट तो बेटर है उनको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखिए, ट्राई के अंदर रखिए, कैच में उसको एंटर कीजिए. ओके, और अगर कोई रिसोर्सेज अगर आपने ओपन की रखी है जैसे कोई फाइल को आपने ओपन कर रखा है और रीडिंग राइटिंग के लिए डेटाबेस कनेक्शन को ओपन कर रखा है टू परपज ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन तो उनको क्लोज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो फाइनली ब्लॉक हैज़ टू एग्जीक्यूट वेदर द एक्सेप्शन रेज और नॉट. ठीक है, ट्राई कैच फाइनली ये होता है. ट्राई विथ फाइनली कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि ट्राई के साथ हमेशा कैचिए, ट्राई विथ फाइनली भी कर सकते हो. Got it? So this is guys I think understood. और ये तो था throws कीवर्ड का यूज. ठीक है, you can specify. Now if you don't want to specify, आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, कंपाइलर क्या कह रहा है बताइए. ऑफकोर्स आप यहाँ पर थ्रोस जैसे आपको नहीं मालूम कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है बट आपको ये मालूम है कि भाई कंपाइलर वाला नहीं कर रहा है और ये चेक एक्सेप्शन हो सकता है तो मैं क्या करूँगा एक्सेप्शन ये ऐड कर दिया. ये रूट क्लास का जो एक्सेप्शन है ये तो सब सारे एक्सेप्शन को इसी के सारे एक्सेप्शन इसी के अंदर आते हैं. तो इफ यू आर नॉट एबल टू बट बेटर है कि एक्सेप्शन को जस्टिफाई कीजिए, एक्सेप्शन को स्पेसिफाई कीजिए, देन यू कैन एबल टू हैंडल द मैटर इन ए बेटर वे. अगर आपको एक्सेप्शन पता है तो आप एक्सेप्शन स्पेसिफाई कीजिए, नहीं पता है तो पता करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो जैसे मैंने पता किया कि यहाँ पर थ्रोस आयु एक्सेप्शन भी लिख सकते हो आप. ठीक है, क्योंकि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो आयु एक्सेप्शन से आ रहा है. आयु एक्सेप्शन इज द रूट एक्सेप्शन फॉर फाइल नॉट फाउंड और एक्सेप्शन लिखोगे तो एक्सेप्शन इज द रूट एक्सेप्शन फॉर आयु एक्सेप्शन. ठीक है, और अगर नहीं करना है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो भाई, वो बेटर रहेगा. अलग अलग एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि आप इससे ये स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई फाइल नॉट फाउंड के लिए अगर कोई मेथड से अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो अगर कोई मेथड आपके मेथड कॉल करता है तो वो वो यू नो वो उस हिसाब से मीनिंगफुल मैसेज दे सकेगा. फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन के लिए वो अलग तरीके से मैसेज देगा और आईओ एक्सेप्शन के लिए अलग तरीके से मैसेज देगा. ठीक है, तो मैसेज को आप कैटेगराइज कर सकते हो इफ यू नो द एक्सेप्शन. Fine. Now we are closing here. The buffer region, okay. Exit. And in detail we will discuss when I take the IO exception, IO related. There is a topic, okay. So in that case, as and we will तब हम IO से related सारे topics cover करेंगे. अभी तो इसमें exceptions के लिए ये हो गया. अभी मैंने अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो उसके लिए देखो तो गैस ये ध्यान रखना अभी मैंने मेथड को कौन स्पेसिफाई करना है मैं जीआरई को बता रहा हूँ कि भाई बी प्रिपेयर क्योंकि ये मेन मेथड
कौन सा एक्सेप्शन रेज कर रहा है, कौन सा एक्सेप्शन रेज कर सकता है फाइनल फाउंड और आईओ। तो यहाँ पर हम जीआरडी पे एक नोटिस कर रहे हैं, इस मेथड के साथ वी आर पुटिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कि भाई इस टाइप के एक्सेप्शन रेज हो सकते हैं इस मेथड के अंदर। सो जीआरडी विल बी मोर क्लियर, उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई फाइंड नॉट फाउंड और आईओ एक्सेप्शन है, तो व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट जीआरडी विल बी मोर क्लियर। इट्स लाइक दैट, अगर आप हैंडल नहीं कर रहे हो, कंपाइलर तो कह रहा है कि भाई हैंडल करो, तो ये चेक एक्सेप्शन है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो आप हैंडल नहीं कर रहे हो, तो कंपाइलर क्या करेगा कि भाई स्पेसिफाई करो नोटिस बोर्ड पे, ठीक है। और अगर आप, ये एक तरह का जो हो गया जैसे बिहेवियर ऑफ डॉग, बिहेवियर ऑफ डॉग, घर के अंदर एक कुत्ता पाल रखा है, बहुत डेंजर है, और उस केस में आपको भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर के बाहर बिहेवियर ऑफ डॉग लिखे। घर के बाहर एड्रेस के साथ में कुछ नाम के साथ में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट कर रहा है भाई बिहेवियर ऑफ डॉग। तो अब कोई जो बंदा आएगा या आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, जब बिहेवियर ऑफ डॉग लिखा है आपके घर के बाहर, तो वो घर में एंटर करने से पहले वो ही विल बी वेरी केयरफुल। आप समझ रहे हो? तो वो फोन करके बोलेगा, पहले फोन करेगा, यार मैं आपके घर के बाहर आ गया हूँ, तो फिर ठीक है, या वो फोन नहीं करेगा तो घंटी बजाएगा, तो ही विल बी रेडी, ही विल बी प्रिपेयर कि जब घंटी खोलेगी तो कुछ डॉग आएगा तो मुझे कुछ ही विल बी रेडी टू हैंडल दैट सिचुएशन, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अगर चेक एक्सेप्शन रेज होता है किसी मेथड के अंदर से, तो वो मेथड ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको या तो हैंडल करो, अगर आप हैंडल नहीं कर रहे हो तो मैंने हैंडल नहीं किया, तो फिर यहाँ पर स्पेसिफाई तो उसकी यू कैन से बिहेवियर ऑफ डॉग आप लगा रहे हो अगर हैंडल नहीं किया। आप चाहते हो कि हैंडल नहीं करना है, हैंडल नहीं करना है, तो यू हैव टू पुट द नोटिस ऑन बोर्ड बिहेवियर ऑफ डॉग। तो अब अगर कोई बिना पूछे आपके घर में आता है, देन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कुत्ते ने काट लिया, या हमने पहले बता दिया कि सर्टिफाइड बिहेवियर ऑफ डॉग करना होगा, ठीक है। समझ में फिर इसमें जो हाउस ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर मान लो उसने हैंडल भी नहीं किया, वो स्पेसिफाई भी नहीं किया, और भाई उसने ऐसा कुत्ता पाल रखा है जो शेर की तरह है, और फिर अगर आप उसके घर में पहुँचते हैं और फिर कुत्ता अगर काट लेता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी। क्योंकि भाई अगर आपने बाहर भी लेके आया तो भाई उसको स्पेसिफाई करो, तो इसको हैंडल रखो, कहीं कमरे के अंदर बंद करके रखो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, बिहेवियर ऑफ डॉग नोटिस बोर्ड पर नहीं लगा रहे हो, तो उसको कमरे के अंदर बंद करके रखो भाई। अगर फिर वो काट लेता है, आप कमरे के अंदर ही बंद नहीं कर रहे हो, उसको अंदर हैंडल भी नहीं कर रहे हो, हाउस ओनर उसको हैंडल भी नहीं कर रहा है, तो फिर अगर अचानक कुत्ता ने किसी को काट लिया, तो भाई फिर वो हाउस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा खर्चा उसको देना पड़ेगा, सारी भरपाई है उसकी। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया बिहेवियर ऑफ डॉग, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने देखा नहीं, हम फोन पे था, आप बात करते करते चले आए, काट लिया, हाउस ओनर आएगा, भाई देखो तो आप उसको बोलोगे कि भाई क्या है, कुत्ता पाल रखा है आपने, बताया नहीं, ये वो, या भाई देखो सामने आपने देखा है ना। सेम थिंग आपने देखा होगा कि जब आप कोई दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में जाते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा लिखा रहता है ना कि भाई स्पीड स्लो होनी चाहिए, 20 to 30 किलोमीटर प्रति आवर की होनी चाहिए, ओके। इट्स दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, मेंटेन द स्पीड बिलो 30। अब उस केस में अगर आप बिलो आप 60 लेके चल रहे हो, कुछ हो जाता है, तो उसमें भाई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे ही कुत्ता अगर आपका धांसू है, खतरनाक है, तो भाई इस पे तो नोटिस
नहीं बता रहे हो तो भाई फिर उसको हैंडल करो। हैंडल हम कैसे करते हैं यहाँ पर, चेक एक्सेप्शन को। चेक एक्सेप्शन आप समझ लो कि एक प्यारा कुत्ता है, बड़ा कुत्ता है, ठीक है, इसलिए कंपाइलर उसको अलाउ नहीं करता। कैच, अब क्या हो गया भाई, अब ये हो गया कि कैच, ये एक्सेप्शन हो गया, और यहाँ हैंडल कर सकते हो सिस्टम आउट प्रिंटलन आईओ एक्सेप्शन, सॉरी ई डॉट गेट मैसेज, गेट कॉल और गेट मैसेज कर सकते हैं, हैंडल कर दिया, कोई एरर कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा, अब सपोज जीआरई इस मैन मेथड को कॉल करने आता है, आ रहा है, एग्जीक्यूट करेगा 1 बाय 1, तो जीआरई को तो आपने इसके नोटिस बुक में डाला नहीं है, ठीक है भाई, ये एक्सेप्शन आ सकते हैं इस मेथड के अंदर से, जीआरई बिल्कुल टेंशन फ्री आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, कुछ इशू आया इसमें, फाइल नहीं मिली लोकेशन पर, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, तो जीआरई फिर वो नहीं करेगा, वो बिल्कुल फ्री फ्री रहेगा, जीआरई एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि आपने हैंडल कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ से जब एरर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, हैंडल हो जाएगा, यहाँ से एरर आएगी तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ में ये करें, तो इसलिए आपको कह रहा है आप हैंडल करो, इसलिए कंपनी वो आपको कह रहा है कि वही हैंडल करो चेक एक्सेप्शन। अगर आपके घर में कुत्ता है, डेंजर है, नहीं है, और रन टाइम एक्सेप्शन में क्या हो जाता है, वो जीआरई कंपाइलर वहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है अनचेक एक्सेप्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो कह रहा है कि आप हैंडल करो नहीं करो, आपने एक ऐसा कुत्ता पाल रखा है जो लोगों को देख के भग जाता है, तो भाई अगर कोई कुत्ता है, घंटी बजी नहीं वो भग गया, आप उसके लिए वो कह रहा है कि आप लिख दो नोटिस बुक पे बिहेवियर ऑफ डॉग, लेकिन वो डॉग की तरह काम ना कर रहा है, वो तो घंटी बजी नहीं वो भग गया, वो छोटा सा कुत्ता है, प्यारा सा कुत्ता, और यार भग रहा है, तो इसलिए उस अनचेक के एक्सेप्शन में वो ये कह रहा है कि भाई आपका कुत्ता तो है आपके पास, अनकोड स्टेटमेंट तो है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको हैंडल कर सकते हो, अगर वो जो छोटा सा कुत्ता अगर आता भी नहीं, जो छोटा सा जो प्यारा सा है, वो काटता नहीं है, लोगों को देख के भग जाता है, अगर वो आया भी तो आप उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो खुद डर के भगा है, ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ एरर स्टेटमेंट कैन बी हैंडल, नो प्रॉब्लम, और जीआरई आल्सो कैन हैंडल, ठीक है, बट चेक एक्सेप्शन चूंकि एप्लीकेशन स्पेसिफिक एरर नहीं होती है, जीआरई के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए कंपाइलर कह रहा है कि भाई पूरा बना दिया हम लिख दो, ओके, ये ध्यान रखना, दिस इज द रीजन, तो इसलिए वो रन टाइम पर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आइदर हैंडल इट और स्पेसिफिक थ्रो, ओके, तो गाइस आप देख सकते हो ये हो गया, इसमें डेटाबेस एक्सेप्शन डेटाबेस साइड से आएगा तो इसका एक्सेप्शन आएगा, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा स्पेसिफिक थ्रो से, ठीक है, ओके, अब ओके गाइस, तो यार हम देखेंगे कि ट्राई विद रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मेरे को मैनुअली आप देख सकते हो कि रीडर डॉग यूज़ किया है, फाइल है ना, यहाँ पर वो हुई थी, यूजर ने फाइल को ओपन किया होगा तो रीड करने के लिए यूज़ किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है गाइस, हम फाइनली ब्लॉक में क्लोज करना भूल जाते हैं, या सपोज एक्सेप्शन यहीं आ गया तो फाइनली ब्लॉक में हो जाता है, सही बात है, फाइनली ब्लॉक में भी कर सकते हैं हम इसको क्लोज, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर फाइनली ब्लॉक में लगाता हूँ, फाइनली ब्लॉक में लग गया, यूजर डॉग,
बेटर है कि इस केस में तो अगर आपको लग रहा है तो मैनुअली लॉग कीजिए। तो ये फाइनली लॉग यहाँ पर बन रहता है कि इसको यूज़ कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे गया, हाँ ये आ गया सपोज। अब मैं ट्राई विद रिसोर्सेज कर देता हूँ यहाँ पे। ट्राई विद रिसोर्सेज में क्या होता है कि जो भी वी डोंट नीड टू यूज देयर फाइनली लॉग टू relocate the resources, sorry, relocate or close the connection or close the file, before closing the file, closing the database connection in the final input, ठीक है। तो ट्राई विद रिसोर्सेज में क्या होता है, जो भी आपने रिसोर्सेज को ओपन किया है तो ठीक है, फॉर रीडिंग राइटिंग पर्पज के लिए डेटाबेस कनेक्शन ओपन हुआ है ट्राई विद रिसोर्सेज के अंदर, तो क्या होता है उस केस में वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसको क्लोज करता है। वी डोंट नीड टू राइट मैनुअली हियर इन केस ऑफ ट्राई विद रिसोर्सेज। सो लेट्स से मैं यहाँ पर ट्राई विद रिसोर्सेज करूँ, यहाँ पर ये किया मैंने, यहाँ पर ट्राई विद रिसोर्सेज यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर में एक्सेप्शन में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर साथ में लेकर कर देता हूँ एंड नहीं नहीं साथ लेकर यहाँ पर ये किया, यहाँ पर ये okay, so this is nice. We have used the try with resources. You see, we have buffer reader class, and we have passing this file for uh, like file name this one. So here buffer reader to keep the file, okay, in character form continuously. तो ये फाइल रीडर क्या करेगा, फाइल फाइल रीडर को कैसे फाइल को कंट्रोल करेगा, बफर रीडर में यहाँ पर करेक्टर फॉर्म में, करेक्टर फॉर्म के बाद फाइल रीडर फाइल के नाम में बफर में, और यहाँ पर बफर रीडर विल रीड द करेक्टर लाइन बाय लाइन, देयर इज a read line, okay, we are reading the file actually, but basically what we are trying to do this, as I told you that this concept I will cover it in separate session, like input output operation totally. So basically we are reading the file, okay, with the help of buffer reader class and line by line, and उसके बाद आप देखोगे कि मैं यहाँ पर रीडर को क्लोज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इट शुड बी क्लोज व्हेन यू डू द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दैट like of course you are performing an operation either through file either through buffer, ठीक है, तो जहाँ पे भी आपने जो स्ट्रीम है उसको क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है, एडिटिंग वाले, क्लोज ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ट्राई विद रिसोर्सेज मीन्स this is the advantage of try with resources, when you open any resources, okay, it will close automatically। डेटाबेस कनेक्शन भी अगर आप यहाँ पे क्लोज करते बनाते तो वो ऑटोमेटिकली फाइल अगर ओपन कर देते, फाइल जैसे राइट करते हैं, ठीक है, फाइल भी बनाते फाइल को रीड राइट के लिए फाइल ऑब्जेक्ट, तो उसको भी अपन ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है ट्राई विद, दिस इज एडवांटेज। सो हियर वी डोंट नीड टू यूज एनी फाइनली